Good morning, students. Today ICA brings you chapter 1 Gravitation, standard 10th science. Okay, so I will start my video with the introduction to the scientist Newton. Newton is the same person who write the Principia Mathematica, जिससे आपको ग्रेविटेशन का लॉ मिल जाएगा. इसने मैथ्स में बहुत सी अपनी डिस्कवरीज की है, बट स्पेशली ये जाना जाता है अपने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी के लिए. देयर इज अ र्यूमर स्टोरी अबाउट न्यूटन दैट उसके सिर पे एक एप्पल गिरा था जिससे उसने ग्रेविटेशन के बारे में सोचना शुरू किया. But that is at all a story. But the actual thinking of gravitation comes in presence due to the scientist Galileo. Galileo ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट जो कि फ्री फॉल का एक्सपेरिमेंट था वो किया था पीसा नाम के एक शहर में एक टिल्टेड बिल्डिंग के ऊपर से एक स्टोन को थ्रो करके. उसने वो फ्री फॉल के एक्सपेरिमेंट से ये बताया था कि वो ऑब्जेक्ट जो उसने फेंका है वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट हुआ है. सो व्हाट इज दिस ग्रेविटी? So let us take a look at this gravity. Gravity is a force of attraction. Force of attraction. Force of attraction between any two bodies. Between any two bodies having mass. Having mass. Okay. So this definition clearly tells us that जिस किसी body के पास mass है, whichever body consists of a mass, it has a gravitation force. दैट मीन्स आपके और आपके फ्रेंड के बीच में भी ग्रेविटेशन का फोर्स है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे नहीं चले जाओगे. दैट इज बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स इज वेरी लेस देयर. बट कंसिडर बिग मासेस लाइक अर्थ और आपके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो काफी ज्यादा होगा बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई यू विल लिटरली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ और आप अर्थ के सरफेस से बाउंडेड हो इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से. ओके, सो अब इन प्लैनेट्स के बीच में की क्या स्टोरी है ये जानने के लिए हमको थोड़ा सा आना पड़ेगा सेंट्रिपिटल फोर्स की तरफ. द सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन. फॉर एनी बॉडी इट इज रिक्वायर्ड. ओके, सो लेट अस टेक अ लुक एट दिस सर्कल. दिस इज अ सर्कुलर पाथ. दिस इज अ सर्कुलर पाथ. दिस जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ सेंटर. तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है? द फोर्स विच इज डायरेक्ट अप्लाइड ऑन द बॉडी. द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी which is directed towards the center and along the radius. एक ऐसा imaginary force होगा, वो आपको दिखेगा नहीं बट ऐसा imaginary force होगा जो कि सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा और रेडियस के अलोंग होगा. इट इज द फोर्स which is directed towards the center and along the radius. Okay, so this is the centripetal force which is required for any planet to revolve around the sun. अब इस सेंटर में अपने सन को रख दीजिए और यहाँ पे कोई भी एक प्लैनेट, तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स हमारे प्लैनेट्स को रिक्वायर्ड है सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए. So students, our next topic is the shape ellipse. Let us know more about this shape ellipse. This circle have many line of symmetry. You can draw line of symmetry at any point from the center. Okay, but the ellipse shape have limited line of symmetries. It has two line of symmetries. That is the major axis. And this is the minor axis. Okay. बेसिकली द एलिप्स शेप विल अपीयर. एलिप्स शेप कब मिलेगा आपको? जब आप एक कोन को, एक कोनिकल शेप को एक इंक्लाइन लाइन या इंक्लाइन प्लेन से थ्रू आउट कट करोगे तब आपको एक एलिप्स शेप मिलेगा. द रीजन्स ऑफ दिस एलिप्स शेप्स आर समथिंग लाइक दिस. अगर मैं इस फोकस को, ये एक फोकस पॉइंट होते हैं, पहले हम फोकस को डिस्कस कर लेते हैं. फोकस पॉइंट मतलब एलिप्स के इस रीजन के अंदर पड़ने वाले रेज अगर मैं लाइट को कंसीडर करूं तो ये सारे रेज जो है एक ही पॉइंट पर आने वाले हैं. ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ फोकस. तो फोकस ये एक पॉइंट ऐसा होगा जो सारी रेज को या पूरी इंटेंसिटी को एनर्जी के एक जगह पे कलेक्ट करेगा. तो इस फोकस पॉइंट को हम लोग, दो फोकस पॉइंट होते हैं एक एलिप्स में. अगर हम एक फोकस पॉइंट को कंसिडर करें तो इसके पीछे का ये जो रीजन होगा, दिस रीजन इज नोन एज द पेरिलियन. और इसके आगे का ये रीजन, पूरा इतना रीजन, दिस इज नोन एज द अपेलियन. ओके, सो दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ एन एलिप्स. दिस बेसिक रिलेशन ऑफ एन एलिप्स, we can say that if we consider the point A and B on this ellipse,
this point A and B, and we mark the distance from one of the focus to the point A and to the point B. Okay, so let us take this law. This law will be stated as AF1 means this distance plus AF2 means this distance will be equal to BF1 this distance plus BF2. This is the basic theory of ellipse. Now our next topic is Kepler's law of planetary motion. Okay, so there is a story about Tycho Brahe and Kepler. Kepler was assistant of Tycho Brahe and both are the observers. They used to make telescopes and observe the space. Okay, so Kepler actually observed the space and he gave some conclusion about the revolution of planets. Okay, so we have to see his laws. So Kepler's first law states that every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of the focus. Okay, so let us imagine that this is the sun and this is any of the planet. Okay, so imagine the shape ellipse, that ellipse having two of the focus. Okay, so let us imagine that one of the focus is here F1 and another focus is here F2. Okay, so the law states that every planet revolves around the sun in elliptical orbits, not in circular orbit जैसा कि अब तक आपको लगता होगा. Okay, so every planet revolves around the sun in elliptical orbits with the sun at one of the focus. Okay, so I think first law is clear. Now again come to the second law. Every planet sweeps out equal areas in equal interval of time. Now here you can see that अपिलियन और पेरिलियन रीजन में जो अलग अलग दिख रहे होंगे आपको, दिस इज द पेरिलियन रीजन एंड दिस इज द अपिलियन रीजन. सो अपिलियन रीजन इज क्वाइट बेटर बिगर देन द पेरिलियन रीजन. ओके, लेकिन ये एक दूसरे से बड़े होने के बावजूद केपलर्स का ये ऑब्जर्वेशन था कि ये दोनों एरियाज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही शिफ्ट किए जाते हैं या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही ट्रैवल किए जाते हैं किसी भी प्लैनेट से. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इमेजिन दैट द प्लैनेट इज हियर. सो ये पेरिलियन रीजन ट्रैवल करते वक्त प्लैनेट की जो स्पीड है वो प्लैनेट की स्पीड लो होगी, लो स्पीड. तो ये धीरे धीरे इस रीजन को ट्रैवल करेगा. आफ्टर दैट अगर वो अपिलियन रीजन में ट्रैवल कर रहा है तो इस रीजन में ट्रैवल करते वक्त उसकी स्पीड जो है वो हाई होगी. एंड दैट्स हाउ द टाइम इज गेट बैलेंस. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लॉ. Okay, now we come up with this third law of Kepler. Okay, so Kepler's third law states that the square of time period of revolution of planet, which is denoted by t here, is directly proportional to the cube root of its distance from sun. Okay, now we literally get to the meaning of this. Square of its time period, mathematically written as t square, is directly proportional to r cube. Okay, so r is the distance here. We can write it as t square is equals to k r cube. Now k here is the constant of proportionality. You have to get it here because in order to remove the proportionality sign. Okay, so now we can write that t square upon r cube is a constant. This is the third law of Kepler. Basically I would like to tell you that Kepler derived this law only on the basis of its observation. This is a hypothesis. It did not have any proof regarding this law. I hope you enjoyed this video. We are providing a limited content to you so that you will not get confused in this content. Okay, so next time we will coming up with the Newton's law of gravitation, also acceleration due to gravity on earth, and what is the difference between mass and weight. Okay, we will also discussing the topic of how Kepler's hypothesis helped Newton to derive its laws. Thank you so much.